Hello, Yeah. ma'am. Can you hear Yes. me? Yes, I can very well. All right. Hi, Suman. How are you? Ma'am, I am not doing well because I have cold and fever. Ma'am, Oh, I would like to tell you how are you, ma'am? How have you I been doing? I would like to ask you. So I'm good, and yesterday also I was down fever. So I'm also not very well. Actually, I had to get some vaccinations, and because of that, there is a fever, body ache, and cold little bit. And also, it's very cold in Punjab, so that is also northern part everywhere. So that also one of the reason most of my learners, which are from northern India, are not really well because it's very chilly. Yeah, here weather is it's very cold. I can say in Yes. West Bengal, we're learning. Okay. Okay. So in Yeah. Punjab also the same thing. But yes, anyway, that's the life. Sometimes we are great and sometimes we have to deal with whatever is happening. So yes, how was your day? Are you on leave? Today's Saturday, yeah. So you're on leave? Today my day off, so that's why today I woke up at 11 p.m. Okay, same here. I also woke up really late. Just wanted to come fully, rest because I take sessions late on Saturday, Sundays. I start by this time. So I just wanted to have rest. And also, I'm at my parents' house right now. So, there's a different feeling in our own house, like in Sasural. We are very different. And in Maika, as we call it, parents' home, we are very, very different. So just enjoying that as well. So these days you are living at your in-laws' house or your parent house? Parents house. I'm at my parents house. That's what I'm saying, that at my in-laws, we have to do a lot of things. Our routine is pretty much set, and we have to take care of the kitchen and everything. Here I'm quite free. In my parents house, everything is done by my mother, so I'm completely free. So I just took the opportunity to fully rest. So yeah. Yes, yes. Okay. So the topic for the day is technology and learning, right? Ma'am, I would like to mention you. Actually, today my topic name is technology and learning. But, ma'am, I want to discuss with you some another topic. Do you have Sure. any topic in your mind? Yes, we can do something around movies. We can do light conversations. At also, we can just do general conversation. We can talk about families, interests, a lot of things. If you have anything in your mind, you can also tell me. What is the meaning of current affairs? Current affairs are general knowledge things, the things which are right now going on. Current affairs is जो अभी ताज़ा ताज़ा general knowledge की चीजें हैं. Just give me 1 second. I'll just go inside because of kitchen now. There will be a lot of noise. Just give me one second. Yeah, yeah, sure, sure. Okay. So, current affair usually means the things which are going on right now, the knowledge of which you should have for different competitive exam. A lot of competitive exams have journal current affairs as their curriculum. So that basically means क्या चल रहा है अभी आजकल न्यूज में. सीधा साधा उसका मतलब यही है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट नाउ there is a lot of controversy going around Maldives. I don't know whether you have heard or not. Modi Yeah, have appreciated Lakshadweep and said that Lakshadweep is very equivalent to Maldives, and Indians should not be going out, and they should enjoy the beauty of Lakshadweep as he was there as a tourist. So that is a major controversy going on. Maldives is not liking that he the the political bureaucrats of Maldives said that this is a very wrong on behalf of Prime Minister Modi, that he's saying like this, and reducing our tourist capacity because 70% of tourists on Maldives are Indians. yeah. So that has affected their tourist industry a lot. So this is a current affair. This is a topic which is going on right now. So that is current affair. Okay, For okay, I can example, if you're understand. giving any competitive exam in 2023, so that means all the things that happened in 2023 till your exam. So those all things are current affairs. Okay, okay. Okay, current things. As the name is, current affairs. जो currently affairs चल रहे हैं, politically, socially, morally, like that. Okay. So I think e- everyone should learn current affairs. If Yes, of course. yes.
Uh, Very be- important, as a teacher, as somebody who's doing conversational videos, as you are doing, as you put videos on YouTube as well. So this is very important that in your sessions or with anybody, or you are working in an industry also, like you go to office, so there will be some colleagues. It is very very important that we are well aware about current affairs, because anytime anybody can ask you things, or there can be discussion on any topic. It should not be like we are quiet and we're not yes. taking talking about anything. So that is really important. And I'm specifically from journalism background. So Okay. abhi to I'm a teacher, but when I was into journalism na, I have done work. I worked with newspapers and television, local television channels. So there to it was expected कि हमें सब पता हो. जो भी हुआ है सुबह, जो हो सकता है, जो हो रहा है, everything we should have knowledge of everything. So yes, current affairs are important, really important. Actually, ma'am, if we don't know current affairs, so how can I communicate with others? Actually, they will think Exactly. that boy don't have more knowledge about current affairs. यस, बिकॉज सी अब यूजली ऐसे बोलते हैं कि लोग हैं तो लोगों की बात करेंगे ना, तो लोगों की बात Yes. करेंगे दैट मीन्स तो आसपास क्या हो रहा है उसकी बात होगी, तो यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट. अदरवाइज इन नॉन फॉर्मल ग्रुप्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली, ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, राइट. यहाँ पे भी हमारा जो सेशन का सेटअप है वो मिक्सचर है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग. बट व्हेन वी आर इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग, इन एन ऑफिस, इन अ जीडी, हमारे बॉसेस हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, देयर वी कैन नॉट टॉक अबाउट आज घर में ये खाया और कल ये बनाएंगे, है ना. तो वी शुड हैव सम कंटेंट टू टॉक अबाउट. वो कंटेंट कहाँ से आएगा? करंट अफेयर्स. Yes, yes. And ma'am, if I tell you on 2024, um, Ram Mandir uh, will inaugurate by our Prime Minister. So that is current affairs or not? That is a current affair, because Ram Mandir is still going on, but it could be a topic of general knowledge also. So it will come in both the things, because Ram Mandir wali controversy completely खत्म नहीं हुई है. अभी भी people are This talking about it. controversy is going on. Yes, it is going on. The talking, the discussion is going on. Basically, people have point of views on this topic. So it could be current affair also, and it could be the topic of general knowledge also. Basically, it is a general knowledge topic. अगर हम देखें तो current affair is usually the affairs within the year we are talking about. अभी 2024 है ना, तो 2024 से लेके 2025 या इस ईयर में 24 में ये current affairs होंगे. करंट अफेयर्स की अगर आप इफ यू विल गो इन द मार्केट एंड बाय बुक्स, तो आएगा करंट अफेयर्स 24. दैट मीन्स दिस इज विल कम इन योर सिलेबस 24 के आएंगे. अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं 23 में, तो वो 23 ईयर के जो करंट अफेयर्स होंगे ना, उसकी बुक मिलेंगी मार्केट की, उसके आएंगे, या लास्ट ईयर की. एक ईयर देखना होता है हमने. जैसे मेरे को अभी नेक्स्ट मंथ फेब में इन 24 आई हैव टू गिव एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव का. तो मेरे करंट अफेयर्स क्या होंगे, लास्ट फेब से लेके 23 और अब फेब की. तो हमने लास्ट ईयर का जो भी हुआ है ना, वो करंट अफेयर्स हो जाते हैं हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे पेपर के अकॉर्डिंग. जनरली अगर हम बात करें रिसेंटली जो चल रहा है लास्ट 3 4 6 महीने से, दैट इज करंट अफेयर. Okay, so we can learn about current affairs by book. Yes, yes, there are books in the market. I can, if you will Google it, now you'll get a lot of options. Let me check. Okay, Actually, so I've given that's competitive exam. See, current affairs मैंने type किया, so वहाँ आ गया current affairs 23, current affairs 24, current affairs 22. So this is how current affairs is कि particular year के. okay. So, ma'am, what is the meaning of NCRTS? NCERT is a curriculum which is given to CBSE boards by Central Education System, Delhi. जो कि दिल्ली का सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम है, वो एक करिकुलम देता है जिसको हम बोल देते हैं एनसीईआरटी. जिसलिए हम बोलते हैं एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स का Okay, मतलब करिकुलम्ड बुक. बट स्कूल्स में क्या हो रहा है, दैट दे आर रिकमेंडिंग डिफरेंट अदर बुक्स. बेसिकली अगर कोई बच्चा, इफ एनी स्टूडेंट इज स्टडिंग इन सीबीएसई, दैट मीन्स ही इज फॉलोइंग अ एनसीईआरटी करिकुलम. If he is following a NCERT curriculum, definitely school has to follow NCERT curriculum, because affiliation तो सेंट्रल बोर्ड की ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना, सीबीएसई का फुल फॉर्म. तो वहां से उस स्कूल की एफिलिएशन है, दैट मीन्स वो एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो कर रहे हैं.
ठीक है Okay. ना? तो जब वो एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, हर एक ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। सो अगर हम एक पेपर दे रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का, तो हमारे पास एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ के वो पेपर देंगे। सो दैट इज़ एनसीईआरटी। द करिकुलम, द सेंट्रल एजुकेशनल करिकुलम, जो कॉमनली सी हर सीबीएसई बोर्ड वाला फॉलो करता है, और बुक्स होती हैं। बट व्हाट स्कूल्स आर डूइंग, गुड प्राइवेट स्कूल्स, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर रिकमेंडिंग अदर बुक्स टू स्टूडेंट्स, कि नहीं Okay. हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाना, इसमें कम नॉलेज है, हमें ये पढ़ाना है। जबकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वट एवर इज देयर इन द एनसीईआरटी बुक्स इज सफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रेड। अगर फर्स्ट ग्रेड की बुक है साइंस की, तो उसमें जितनी नॉलेज है वो सफिशिएंट है। बट स्कूल ऐसे नहीं कर रहे। इवन व्हेन आई वाज इन माय 12th क्लास, आई हैड टू स्टडी अदर बुक्स, बिकॉज क्वेश्चन उसमें से आते नहीं थे एनसीईआरटी में से। Yes, ma'am. Actually, So when I that is what was schools are in doing. 10th standard, when I was in 10th standard or 8th standard, that time we did not uh, learn NCRTs because my एनसीईआरटी इज, medium is Bengali. या एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि स्कूल वालों ने नहीं पढ़ाया। आप सीबीएसई, यू आर फ्रॉम सीबीएसई और No, ma'am. अदर बोर्ड? I'm from state board. स्टेट बोर्ड, फिर I देन came देयर इज from नो state board. एनसीईआरटी। देन देयर इज नो Yes. एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फॉर सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड, दैट मीन्स फ्रॉम दिल्ली। So Okay. when there is a central board, that means the NCERT books. That is also national curriculum. Okay. 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 Actually, ma'am. Uh, okay. I think you wanted to say something. No, no, Continue. no. I was listening to you. Actually, I have watched one video. That video name was 12 failed. So that time they Movie. mentioned Movie or NCRT video? movie. Movie. Yeah. So that time I heard this name NCRT's current affairs and etc etc. So Okay, that's why okay, I okay. asked you. That's why. That is why I was referring to paper also. I watched the movie. I loved the movie. Movie is really nice. So क्या होता है? ये जो सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी, और कोई भी सेंट्रल बोर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड के अपने एग्जाम्स होते हैं, बैंक के एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। दे ऑल फॉलो और दे ऑल गेट देयर क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। ओके, सो द पर्सन हु इज स्टडिंग फॉर यूपीएससी, उनके सिलेबस में होता है फर्स्ट टू टेंथ ग्रेड का करिकुलम। Okay. ये सिलेबस में होता है प्रीलिमिनरी, फर्स्ट जो पेपर होता है ना उसके लिए। सो देन दे रीड एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ क्लासेस। एनसीईआरटी Okay. बुक्स, बिकॉज सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम जो बैठती है बच्चों के पेपर बनाने के लिए, वही कमेटी यूपीएससी का पेपर बनाती है Okay. Okay. एनसीईआरटी बुक्स में से। सो दैट Okay. इज व्हाई इट इज वेरी मच रिकमेंडेड टू स्कूल्स कि व्हेन यू आर टीचिंग, व्हेन यू रिकमेंडिंग बुक्स, एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक्स नहीं लगाइए। बट ऐसा नहीं करते हैं स्कूल्स वाले, जस्ट टू अर्न मनी। बिकॉज इफ एनसीईआरटी बुक्स कैन कॉस्ट यू अराउंड 1,000 rupees for all the books of that particular class, English, Science, Math, SST. But whereas the books they are giving you is of 5,000, 6,000 rupees, so there is a huge margin. So that is why they're not recommending you एनसीईआरटी books in the schools. बट अगर हमें कोई भी जनरल एग्जाम देना है ना, सेंट्रल बोर्ड का, यूपीएससी हो गया, बैंक के एग्जाम्स हो गए, यूजीसी नेट हो गया, जो कॉलेज के लिए, पीएचडी के लिए एंट्रेंस में देते हैं हम, दे ऑल कम फ्रॉम एनसीईआरटी सिलेबस। सो इट इज वेरी मच सफिशिएंट इफ यू रीड एनसीईआरटी। Okay. Okay. Okay, so NCERT is National Curriculum of Education, something like that. I'll give you the full form. So National Council of Educational Research and Training. So it is a national council of education and training. So उनकी अपनी books होती है for CBSE students. Okay. Okay. And it is very much important. ये mandatory होता है for every UPSC aspirant who wants to give UPSC exam to study NCERT books for first class to 10th class, because the first paper will come from that. Actually, ma'am, when I watched that video, after that I inspired. So then I thought I have to learn NCRTs. So Yes, these I days got I am inspired. First of all, there's a problem in the tenses. When I watched that movie, I got inspired. okay. Watched, because you've already watched it, right? When I watched that movie, I got inspired. Yes. Okay, okay. Actually, Uh, I when I was preparing for my bachelor's, when I was in my bachelor's, I also think and I also researched a lot about UPSC exams. I wanted to okay, appear for it.
So I was researching what could be the syllabus, what I need to do for it for about 2 3 months. That is why I've quite knowledge about UPSC. Ma'am, UPSC syllabus, it's just too big, I can say. Very too vast. Big is not the right term for the syllabus. For syllabus, we can say it's too vast. Vast मतलब सब कुछ है उसके अंदर. Yes, the UPSC syllabus is vast. Why? Because when you will go to the site and search for the syllabus. UPSC, first of all, let me tell you, UPSC has two exams. First is Prelims and preliminary mains. out. Sorry. First is prelims and second is mains and Yes, third is prelims. interview. Third is interview. First is prelims. Prelims is general test for which is common for everybody, and it is usually social studies and maths, little bit English, and MCQ questions are there. 200 questions will be there. There is a negative marking also, and usually the syllabus is first to 10th class. NCERT books. So you have to study all NCERT books of all the grades and like that. Current affairs also are there. So that is first. Then comes the mains paper. In the mains paper, you have to write lengthy answers, and that too comes from the subject that you have chosen. So you can choose any subject: political science, economics, journalism, communication, English. There are so many options, so you choose one subject for yourself, and the other paper is, I guess, some language paper. So two papers come: Hindi language, maybe English language, and then the subject question that you choose. So that comes to you. So you हैव टू राइट लेंथी क्वेश्चंस एंड जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, जब आप साइट पे जाके सिलेबस चेक करते हो उनका, तो उन्होंने कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन ही नहीं किया हुआ. दैट इज व्हाई द सिलेबस इज वॉज, दे आर जस्ट सेइंग कि इसको पढ़ के आना, और कुछ स्पेसिफिकली दे हैव नॉट मेंशनड. अब उस पॉलिटिकल साइंस, दैट मीन्स इट कुड बी एनीथिंग. क्या Yes, पॉलिटिकल yes. साइंस में आप ऐसा पढ़ोगे जब आपको स्पेसिफाई कुछ किया ही नहीं हुआ? कुछ भी हो Yeah, सकता है. there is too 2022 में क्या long हुआ हो सकता है. chapter. इट्स अ लॉन्ग थिंग. आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो. देयर इज नो एंड टू द सिलेबस. इट्स जस्ट कि आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है आप उसके ऊपर नोट्स बनाते हो. फिर पुराने पेपर्स जो आए हैं उसमें से क्वेश्चंस यू पिक अप, एंड देन यूजुअली फर्स्ट टू 10th क्लास में से दे समटाइम्स चूज 2 3 टॉपिक्स, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. सो it is very vast, and it is इसीलिए it needs your discipline and consistency. So these two qualities, they are checking on you. कंसिस्टेंट होगे तभी तैयारी होगी, और डिसिप्लिन होगे तभी दिन में 5 4 6 घंटे निकाल पाओगे. And So there are दैट so इज व्हाई. many and there are so many students follow 10 Moment. years back question and answer. Yes, yes, because it is very important. I also gave UGSC, I gave SBI exam, I gave bank exam. So my first thing was to check previous year question papers, because sometimes because see the people who are sitting to pick question papers है ना, वो भी कोई इंसान ही है हमारे जैसे. सो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो और इसमें से ना दो दो क्वेश्चंस डाल देते हैं. क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस. क्या पता मैं पता नहीं कितने क्वेश्चन पेपर्स एक दिन में प्रिपेयर कर रही हूँ. मेरे पास इतना माइंड नहीं है, मेरे पास इतना ध्यान नहीं है. तो बहुत मुश्किल है. आप उनकी टेंडेंसी भी समझ के चलो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इज द बेस्ट थिंग टू डू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, और आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है, बिकॉज दे आर because ऑल्सो ह्यूमन. because दे we are गोइंग टू डू not दीज. robot. Because we are या not robot, नोबडी we are इज a अ रॉबोट. human. हाउ कैन दे. ये पेपर्स को चल रहा है 50 साल 60 साल हो चुके हैं. सो हाउ कैन दे कम अप विद द न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम. Yes, yes. So I gave my SBI General Bank exam. I prepared it on my own. I gave first exam, and it was just by 2 marks. I was not able to clear it, and that too because of journal category. तो उसमें नहीं हुआ था. अगर मैं ऐसी में होती तो मेरा क्लियर हो जाता, क्योंकि उसका जो था उसमें मैंने कट आउट कर लिया था. I So think after that, I think every year 10 lakh student fill up UPSC from, but when they give exam prelims, that time only 5 to 6 lakh student give that exam. less than that, 5 lakh means 50%. The ratio is not 50%. The ratio comes to 30% only. That means about 2 3 lakhs. Yeah, after that only 13,000, 15,000 student got select for prelims exam. Yes.
So Yes, the ma'am. problem is that also because of the number of students who are going to go giving. That is why the cutoff also gets very, very difficult to crack. Ma'am, without teaching, if I want to become IAS or IPS, is it possible or not? Without teaching, Yeah, without coaching. Sorry, without without coaching. coaching, yes, it is possible. यूजली क्या होता है प्रीलिम्स के टाइम पे पीपल डू नॉट प्रेफर एनी कोचिंग Okay. they Okay. do it by their own and usually people clear it. For mains what happens is ki, because the syllabus is not quite specific, so there is mains में ना टेक्निक ज़्यादा चलती है ट्रिक्स Yes. टेक्निक्स बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग लेंथी पेपर. अगर आपने ट्वेल्थ फेल देखी है तो आपने देखा होगा दैट पर्सन ऑल्सो वेंट फॉर कोचिंग. अब इसमें Yes. बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ. पहली चीज़ है कि उसको इंग्लिश ही नहीं आती थी और उसने इंग्लिश में पेपर देना था है ना. Yes, ma'am. Yes. है ना इंग्लिश का उसका सब्जेक्ट था. सो उसको इंग्लिश नहीं इतने अच्छे से आते तो ही वेंट फॉर कोचिंग. देन ही केम फ्रॉम एन एरिया विच वॉज वेरी बैकवर्ड. तो Yes. दैट इज ऑल्सो अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर यू बिकॉज आप एक ऐसे एरिया से आ रहे हो आपके पास एक्सपोजर नहीं है. आपने ट्वेल्थ बहुत मुश्किल से क्लियर करी है सो डेफिनेटली यू नीड हेल्प. हेल्प क्या होती है कोचिंग. I'm using Yes, Hindi ma'am. for you because if you I want to clear your queries so आपको अच्छे से समझ आए that is why I'm using Hindi in between. ठीक है. Yeah, yeah. You can, ma'am. You can. ओके ओके. No सो problem. उसने इसलिए किया क्योंकि वो एक ऐसी जगह से आया था उसने ट्वेल्थ बहुत मुश्किल से क्लियर करी बहुत पिछड़ा हुआ उसका गांव था. सो ही नीडेड हेल्प और हेल्प किस फॉर्म में उसको चाहिए थी कोचिंग के फॉर्म में. ठीक है. सो Yes. इट डिपेंड्स ऑन सो मच ऑन योर थिंग इफ यू आर बाय नेचर अ वेरी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट पर्सन. आप अपने आपको पता है कैसे तैयारी करनी है. आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं बिकॉज कोई ना कोई तो चाहिए ना कोई हेल्प तो चाहिए. Yes, अदरवाइज ma'am. ये तो एक बहुत हम ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि हम खुद से ही कर लेंगे. तो अगर आपके पास कुछ फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग में है कोई है जिन्होंने क्लियर किया है या क्लियर करना चाहते हैं जिनके पास नॉलेज है अगर आसपास ऐसे कोई है देन इट्स फाइन. आप उनसे पूछ सकते हो अपनी क्वेश्चंस आप उनसे डिस्कस कर सकते हो. तो ये इम्पोर्टेंट है कि कोई हो आपके पास. अगर कोई क्वेरी है कौन सॉल्व करेगा अगर कोई है ही नहीं. तो वो उसके लिए चाहिए होती है हेल्प. और दूसरी चीज़ है कि इसमें ना ट्रिक्स बहुत काम आती हैं कि अगर कोई आंसर आपको लिखना है. अब 5-6 क्वेश्चंस आते हैं आई गेस फॉर 3 आवर्स जिसमें आपको 3-3 4-5 पेज भरने होते हैं एक एक आंसर पे. सो वो मोस्टली यू विल लिसन फ्रॉम स्टूडेंट्स दैट उनका पेपर ही खत्म नहीं हुआ. दे वर नॉट एबल टू फिनिश द एग्जाम इन 3 आवर्स. इट इज सो लेंथी. सो इसमें ट्रिक्स आती हैं होती हैं कि कैसे लिखना है कैसे हेडिंग देनी है कैसे आपको शीट्स भरनी चाहिए. पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है. पेपर अटेम्प्ट करने का फॉर्मेट क्या है. पेपर अटेम्प्ट करने का ट्रिक क्या है. क्वेश्चन अगर 10 है उसमें से अगर 5 करने हैं तो आप कैसे चूज करें कौन से 5 हम करें. सो ये चीज़ें होती है इसके लिए लोग हेल्प लेते हैं. सो अब इसमें यही है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्यों ना लो लो बिल्कुल लो. अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप अपने आसपास ऐसे रिसोर्सेज रखो जिनसे आप ले सको. जैसे देर आर सो मेनी ऑनलाइन साइट्स जो आपको पूरा मटेरियल देती हैं जस्ट फॉर 1500 जो आपको एक्सपर्ट हेल्प भी देती हैं. देन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर आप कोई फ्रेंड कोचिंग ले रहे हैं उनसे आप प्लीज सोशल कांटेक्ट रखो सो दैट दे कैन हेल्प यू. देन योर टीचर्स फ्रॉम स्कूल और कॉलेज और फ्रॉम कलीग्स एनीबडी हु इज डन यूपीएससी या यूपीएससी उसने अटेम्प्ट किया हुआ है नहीं क्लियर हुआ तो उसका एक्सपीरियंस हुआ आपके पास. सो समबडी शुड बी देयर इन योर सर्कल हु कैन गाइड यू लिटिल बिट. Yes, ma'am. ठीक है Actually, बट ma'am. ये इम्पॉसिबल नहीं है. हम ये नहीं कह सकते कि कोचिंग मस्ट है कोचिंग के बिना क्लियर नहीं होता. देर आर सो मेनी टॉप रैंकर्स जिन्होंने कोचिंग के बिना किया है. इवन टीना दाबी वेंट फॉर कोचिंग फॉर अबाउट 1 मंथ जो लास्ट मंथ की लास्ट टाइम की फर्स्ट थी टीना दाबी फ्रॉम दिल्ली. उसने कुछ 1 महीना कोचिंग करी थी सिर्फ. सो वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. Yes, ma'am. And not prelims, a mains exam is very difficult for every UPSC student because वेरी if डिफिकल्ट. if I prepare for mains exam, so I have to write continuously 6 hour नॉट because फॉर 6 आवर्स 3 आवर्स. but ma'am, I heard from somewhere 6 hour it's need. 6 आवर्स आई डोंट नो 6 आवर्स का एग्जाम लेट मी चेक अभी चेक कर लेते हैं.
3 hours, yes, not 6 hours. Okay, so I think I heard You misheard, maybe wrong. he was not sure, but yes, it is for 3 hours. Like school के exams होते हैं ना colleges के वैसे. Okay. Okay, Suman, I have another session to go to, and it was nice talking to you about these things. You have made me go back to my time when I was very much wanted to do UPSC, but destiny sometimes have another plans for you. But I'm Yes, happy ma'am. now also. But yes, if you need any help in this sector, I can definitely help you because I've given quite an year or so of my life to these competitive exams, so I'm quite aware. So कुछ पूछना हो तो आप नेक्स्ट सेशन में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, नो Sure, ma'am. प्रॉब्लम, आई एम वेरी Sure, हैप्पी टू आंसर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट? sure, ma'am. टेक केयर And ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ today I learned so many things. I got more information. Uh, Same here, it is always two ways. When I answer and when you question, you also have some things to tell from your end. So मैंने भी बहुत चीजें नई थोड़ी सी मेरे को भी पता लगी, हमने कुछ new topics भी discuss किए. So it's always two ways. I also got to learn a lot from you as well. So thank you so much. Have a wonderful day. Take care of yourself and hopefully get well very, very soon. sure, ma'am. Thank you for giving me your Okay. precious time. Take care, No ma'am. Bye. problem. That's my job. Okay. Bye. Okay, ma'am. Bye.